हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ जो है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या फंक्शनल अथॉरिटी है, उसके ऊपर व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन अथॉरिटी रिलेशनशिप। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सारी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये है बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का पेपर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन का यूनिट 3 के सारे नोट्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे पीडीएफ में आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इतना तक कंप्लीट कर लिया था इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। आज बात करेंगे डीमेरिट्स। द डीमेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर। सबसे पहले देखिए कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। देयर इज concentration of authority at the top, full stop. If the top executives are not capable, the enterprise will not be successful, full stop. Moreover, the key executives are overburdened with the administrative work. Number 2 देखिए difficulty in staffing. Executives in a line organization are required to have knowledge of diverse functions, full stop. Capable executives are difficult to recruit and train. Number 3 देखिए instability. The success and survival of the enterprise depends upon a few individuals, full stop. There is a little scope for expansion of business beyond their capabilities. Number 4 the lack of specialization. Line organization is not suitable for big organizations because there is lack of specialization. Full stop. A line executive cannot be an expert in all functions. Number 6 देखिए ineffective communication. There is practically no communication from bottom or upwards because of concentration of authority at the higher levels and autocratic attitude of the top executives. दूसरा देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में देखिए स्टाफ रिक्वायर्स रेफर्स टू दोज एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस टू द लाइन, फुल स्टॉप। इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, द लाइन सर्व्स टू मेंटेन यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिसिप्लिन, व्हेयर एज द स्टाफ प्रोवाइड्स एक्सपर्ट नॉलेज एंड एडवाइस इन द सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप। लाइन एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज, फुल स्टॉप। स्टाफ्स आर ऑक्सिलरी टू लाइन, फुल स्टॉप, इन प्रोवाइड एडवाइस एंड information and assistance to line executives to enable them to work efficiently. Features of line and staff organization are as under. Number 1 देखिए सबसे पहले in line and staff organization the line authority moves down in the same manner as in the organization. Number 2 specialists are attached to the line managers to advise them on important matters. They stand ready with their speciality to serve line managers as and when their services are called for to collect information and to give expert advice. Number 3 the staff officers do not have any power of command in the organization as they are employed to provide advice to the line officers. Number 4 in most organizations, the use of staff can be traced to the need for help in handling details, gathering data and offering advice on specific managerial problems. उसके बाद देखिए मेरिट्स और एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पे देख सकते हो पहला जो है स्कोप ऑफ ग्रोथ है। देयर इज ए बेटर ग्रोथ स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द एंटरप्राइज एज असिस्टेंस एंड एडवाइस टू स्टाफ स्पेशलिस्ट इज अवेलेबल टू कोप अप विद हायर वॉल्यूम ऑफ वर्क। नंबर 2 देखिए स्पेशलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लान्ड स्पेशलाइजेशन एंड ब्रिंग्स अबाउट द एक्सपर्ट नॉलेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मैनेजमेंट। नंबर 3 इज बेटर डिसीजन। स्टाफ स्पेशलिस्ट हेल्प द लाइन मैनेजर इन टेकिंग बेटर डिसीजन बाय प्रोवाइडिंग देम विद एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑफ राइट टाइप एट द राइट टाइम। और बाकी वीडियो में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर बहुत ही बड़ा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।